Hello friends, welcome to Python Guruji YouTube channel, and in this video we will do one example based on if-elif statement. In last video, as we have discussed about the if-elif statement, what is if-elif statement and what is the need of if-elif statement, and we have also seen one example based on if-elif statement. So if you want to know about the if-elif statement, please see the last video. And in this video we will write the one program based on the if-elif statement. The topic of the program is write a program to enter the number and print the day of corresponding number. So in this program we will enter the number and then print the day of the corresponding number. जैसे हम संडे मंडे तो फिर हम नंबर एंटर करेंगे. जैसे मैं 1 एंटर कर रहा हूँ तो मंडे प्रिंट होना चाहिए, 2 एंटर कर रहा हूँ तो ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए. तो लाइक दिस वी विल एंटर द नंबर एंड प्रिंट द corresponding डे. So let's start the program. First I will write the day equal to num input. In this input we will write enter the day if num equal to 0, that means print Sunday, not 0, sorry, 1, Sunday. Next statement. Now see, in this program we will, as there is a multiple condition like 1 for num, 1 for Sunday and 2 for Monday and 3 for Tuesday. So for this program you will write the if-elif statement. So if-elif num equal to 2, sorry, so print Monday. Don't put in the quoted because it will treat like a string. अगर आप इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 और 2 को लिखेंगे तो फिर वो एज अ स्ट्रिंग रीड हो जाएगा. तो मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ. कॉपी enter 2, enter 3, enter 4, enter 5, enter 6 and enter 7 means elif condition. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. And last one, that is the else statement, is optional. Either you can write the else statement, it is up to you. आप else statement को लिख भी सकते हैं और नहीं भी. इसके अंदर आप कुछ भी मैसेज प्रिंट कर दीजिए. enter the correct number. इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे. पहले सपोज मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ test.py.
py एक्सटेंशन से। अब मेरा ये प्रोग्राम सेव हो चुका है। इस प्रोग्राम में हमने क्या करा है कि हमने नंबर एंटर करेंगे। हमने नंबर को इनपुट फंक्शन से एंटर कराया और जैसे ही नंबर की वैल्यू 1 होगी तो संडे प्रिंट होगा, 2 होगी तो मंडे प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशंस हमने यूज़ करी है इन द इफ एलिफ स्टेटमेंट। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। एंटर द डे 3 means Tuesday, so let's check out the 3 is Tuesday, so whether 3 is Tuesday. So see the condition here is the day 3 is a Tuesday. Yes, when the number value is 3, when the num value is 3, तो 3 is equal to 3, then it will print the Tuesday. ऐसे ही मैं इसको एक और बार इंटरप्रेट कराता हूँ। एंटर द डे, अब मैं 1 इंसर्ट करता हूँ तो संडे, 1 पे संडे आ रहा है। फिर से इंटरप्रेट कराता हूँ। अगर मैं सपोज नंबर इंसर्ट कर देता हूँ 8, तो एंटर द करेक्ट नंबर, दैट मीन्स एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ इस प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशंस है 1 से लेकर 7 तक, और अगर आप कंडीशन ग्रेटर देन 7 इंसर्ट करते हैं तो एल्स में जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा कि एंटर द करेक्ट नंबर। सो दिस इज द यूज ऑफ इफ एलिफ स्टेटमेंट in Python when we have the multiple condition as you see in this program. So this is all about the if-elif statement and the program based upon the if-elif statement. So if you have any query regarding if-elif statement or previous video or previous statement, then you may write inside the comment box. And if you like this video, then please subscribe my channel. Thank you.